डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम थांग इंटरनेशनल एजुकेशन सिस्टम की तरफ से डिज़ाइन किया गया थांग 1 कोर्स का लेसन 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। थांग इंटरनेशनल एजुकेशन ने ये कोर्स डिज़ाइन किया है। इसके अलावा थांग 2 और थांग 3 के भी कोर्सेज हैं जो नेक्स्ट सेमेस्टर्स में इंशाल्लाह आप स्टडी करेंगे। तो थांग 1 का कोर्स बेसिक कोर्स है और इसमें ये आज हम लेसन 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें टोटल 16 लेसन्स हैं। हर लेसन के 3 पार्ट्स हैं, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। हर पार्ट में कुछ वीडियोस होंगी, कुछ प्रेजेंटेशंस होंगी, कुछ एक्सरसाइजेज होंगी, कुछ होमवर्क होगा, ये आपको दिया जाएगा। और ये जितनी भी आपकी ये वीडियोस, प्रेजेंटेशंस और होमवर्क है, ये थांग की ऐप के ज़रिए आप तक पहुंचाया जाएगा। थांग की ऐप जो है वो आप इंस्टॉल करेंगे, उसमें थांग सिस्टम की तरफ से जो आपको आईडी पासवर्ड दिया जाएगा वो आप यूज़ करते हुए लैप उसमें लॉगिन होंगे ऐप में, और उसके बाद आप ऐप में ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो हम आज लेसन 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेसन 1 का पार्ट ए है, फर्स्ट वीडियो है। ये चाइनीज़ कैरेक्टर्स के बारे में चाइनीज़ टीचर आपको ब्रीफ करेंगी। इसमें चाइनीज़ कैरेक्टर्स क्या होते हैं, ये कैसे एवॉल्व हुए, इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, इनकी हिस्ट्री क्या है, इन सब के बारे में चाइनीज़ टीचर आपको बड़े अच्छे तरीके से ब्रीफ करेगी और मैं भी साथ उसको एक्सप्लेन करता जाऊंगा। और अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस होंगे तो देन यू कैन आस्क द क्वेश्चंस। Hello everyone, welcome to Tang Chinese class. Today, it is the first lesson for you. Now we are going to learn lesson 1, part A. Before learning Chinese, please look at the title. What can you find? Good, you can find 你好 in 2 different forms. As we can see, to record Chinese, we need 2 tools. One refers to the Chinese character like 你好, and the other one refers to the phonetic system, 拼音, like 你好 in this way. At the beginning, let's have a look at the unique and special Chinese characters. चाइनीज़ टीचर ने आपने के साथ लेसन 1 का टाइटल शेयर किया है और इसका टाइटल बड़ा वेल नोन वर्ड है। जब भी आप कभी चाइना या चाइनीज़ के बारे में सुनते हैं तो एक जो पहला लफ्ज़ आपके जहन में आता है वो है नी हाओ। नी हाओ जिस तरह हम एक ग्रीटिंग्स, कोई भी मिलते हैं आपस में, ग्रीटिंग्स होती हैं, अस्सलाम वालेकुम, हेलो। तो चाइनीज़ की जो इस तरह आपस में मिलते हैं, ग्रीटिंग्स एक दूसरे को करते हैं, तो वो नी हाओ है और आप में से काफ़ी सारे लोग फेमिलियर भी हैं इससे। तो ये आप नी हाओ देख रहे हैं, जो राइट साइड पे नज़र आ रहा है नी हाओ लिखा हुआ, ये तो आपको समझ आ रहा है, लेकिन शायद जो चाइनीज़ कैरेक्टर्स 2 लिखे हुए हैं वो में भी आपको समझ ना आए, अभी बाद में आएंगे। अच्छा, एक तो 3 चाइनीज़ कैरेक्टर्स ऊपर लिखे हुए हैं, जिन वो वाइट कलर की जो फर्स्ट रो है जिसका वाइट कलर का बैकग्राउंड है। मैं ये बात कर रहा हूँ ये जो स्ट्रिप है ब्लू कलर की, इसमें लिखा हुआ है चाइनीज़ कैरेक्टर्स हैं 2, नी हाओ, फिर वर्सेस लिखा हुआ है और फिर नी हाओ लिखा हुआ है। लेकिन ये जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में नी हाओ लिखा हुआ है, ये हो सकता है आपको इंग्लिश वाला ना महसूस हो रहा हो, क्योंकि आई और ए के ऊपर कुछ स्पेसिफिक मार्क्स हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये आपने इंग्लिश में नहीं देखे होंगे। ये ऐसे ही है जैसे उर्दू में या अरबी में ज़ेर ज़बर पेश होते हैं। तो बहरहाल बात करने का मकसद ये है कि नी हाओ को 2 तरीकों से यहाँ पे लिखा गया है। एक चाइनीज़ कैरेक्टर में लिखा गया है और दूसरा इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में लिखा गया है। कह सकते हैं, अभी वक्ती तौर पे कह सकते हैं, बाद में जब इसकी डिटेल सामने आएगी तो फिर आपको पता चलेगा कि ये क्यों ऐसे लिखा गया है। तो ये 2 सिस्टम है, एक राइटिंग सिस्टम है जिसमें ये चाइनीज़ कैरेक्टर्स आते हैं, दूसरा जो है फोनेटिक सिस्टम है। फोनेटिक सिस्टम जो है इसको हम फिनियन सिस्टम कहते हैं। लिखने को तो वो PINYIN है, लेकिन उसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो चाइनीज़ में फिनियन है। ये इसको भी हम बाद में देखेंगे कि ये प्रोनाउंसिएशन कैसे प्रोनाउंस की गई है, कैसे बोली गई है।
तो अभी से बहरहाल ज़हन में आप रख लें कि 2 सिस्टम्स आपने स्टडी करने हैं। एक राइटिंग सिस्टम है जिसमें चाइनीज़ कैरेक्टर्स हैं और दूसरा एक फोनेटिक सिस्टम है कि इन चाइनीज़ कैरेक्टर्स को आपने प्रोनाउंस कैसे करना है, इनको बोलना कैसे है। वो फोनेटिक सिस्टम फिनियन सिस्टम कहलाता है और उसमें ये वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, कुछ अल्फ़ाबेट्स यूज़ किए जाते हैं। इंग्लिश वाले हैं लेकिन लाजमी नहीं है कि उनकी और चाइनीज़ में दोनों की साउंड सेम हो। तो इस वजह से आप ये चीज़ें ज़हन में रखें कि इनकी आप थोड़ी सी हैरान होंगे। मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि इनकी जो है बज़ाहिर ये शेप शक्ल व सूरत तो इंग्लिश वाले अल्फ़ाबेट्स की है लेकिन इनकी साउंड ज़रा डिफरेंट है। तो बहरहाल अभी 2 सिस्टम है, चाइनीज़ राइटिंग सिस्टम जो चाइनीज़ कैरेक्टर्स पे मुश्तमिल है, दूसरा ये अल्फ़ाबेट्स इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये फोनेटिक सिस्टम है, इनके साथ ऊपर कुछ मार्क्स भी हैं, इनको हम टोन्स कहते हैं और इसको हम फिनियन फोनेटिक सिस्टम कहते हैं। इसकी डिटेल्स भी आगे चल के हम देखते हैं। Chinese characters is amazing. Do you think so? It can travel through time. Do you think it is real? Let's think about it. People nowadays can understand what has been written on a stone, even if it is from 2,000 years ago. Isn't it amazing? We all know that Chinese is full of magic. Here comes an example. This character was created 3,000 years ago. Although it has evolved in different forms after so many years, a child knows its meaning. Can you have a guess? Oh, you are so smart. It's a Chinese character, Yen. Why can Chinese character be read and understood even after thousands of years? Because Chinese character is the only existing writing system of the signifying system. चाइनीज़ टीचर ने आपको एक चाइनीज़ कैरेक्टर रन के बारे में बताया। ये कैरेक्टर जो है बेसिकली एक पर्सन के लिए यूज़ होता है, एक आदमी इंसान के लिए यूज़ होता है और उससे पहले उन्होंने थोड़ा-सा आपको ब्रीफली ये बताया कि चाइनीज़ लैंग्वेज बहुत पुरानी है, ये स्टोन्स पे भी लिखी हुई है और स्टिल मतलब ये बाकी जिस तरह तहज़ीबें दुनिया में आईं और चली गईं और गुमशुदा हैं, लोगों को नहीं पता, चाइना में स्टिल जो है वो चाइनीज़ कैरेक्टर काफ़ी हज़ारों सालों से यूज़ हो रहे हैं। तो फिर उन्होंने ये कैरेक्टर के बारे में बताया। अब ये जो इमेज है ये मैंने आपके लिए इसमें ऐड की है। आप इस कैरेक्टर को देखें तो जब ये कैरेक्टर हज़ारों साल पहले पहली दफ़ा लिखा गया तो वो कैसा था और उसकी रीज़न क्या थी? मतलब वो एक आदमी की सूरत से मैच करते हुए शुरू में कैरेक्टर बनाया था। फिर वो कैरेक्टर मुख्तलिफ स्टेजेस से गुजरते हुए फाइनली किस फॉर्म में आपके पास आया है। तो इसको हम रन कहते हैं, REN है लेकिन वो आर की साउंड ना इंग्लिश वाली नहीं है, वो रे और जोए के दरमियान आवाज़ निकलती है। वो नेक्स्ट जब हम फिनियन पढ़ेंगे तो आपको क्लियर होगी। तो यहाँ पे मकसद इस इमेज का आपको दिखाने का ये था कि आपको ये पता चले कि चाइनीज़ कैरेक्टर्स कोई वैसे नहीं बने हुए, इनकी हिस्ट्री है, इनको पिक्टोरियल या पिक्टोरोग्राफिक फॉर्म में होते हैं। ये फॉर एग्जांपल अगर आदमी का कैरेक्टर है तो वो शुरू में जब ये बनाया गया था तो वो आदमी की शक्ल से ये मुताबिकत रखता था, फिर आहिस्ता-आहिस्ता ये तब्दीलियों से गुजरा और आज जो है वो आपके पास इस सूरत में है। इस तरह की और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जो आगे चल के हम आपको देंगे। According to the statistics, there are more than 18,000 Chinese characters, but only 3,500 of them are commonly used. So, how many Chinese characters do you need to learn? 3,500? Then you can graduate from the Chinese university. Actually, we can go to China and live there after learning 200 basic characters. The Chinese character has been passed down for more than 3,000 years. Where did this Asian and vibrant character first come from? Today,
Let's explore the mystery in it together. Let's take a look at this. What is this? Right, it is a painting. This painting was printed more than 3,000 years ago. Can you guess what has been drawn on it? Let's have a guess. What is this? Right, they are mountains. The sun, water, birds, and so on. We can still understand the information that people has conveyed 3,000 years ago. Isn't it amazing? In fact, Chinese character began to evolve from pictures. Look. This is Shang. This is 水. And this is 田. Evolving from pictures, this kind of Chinese characters are called pictographic characters. The formation of character is called pictogram. Isn't it very interesting? चाइनीज टीचर ने आपके साथ एक काफी पुरानी पेंटिंग शेयर की है। बड़ी सिंपल सी पेंटिंग आपको दिखाई दे रही है ये, और उसमें चाइनीज टीचर ने आपको दो तीन चीजें बताई हैं। एक पहाड़ है, ठीक है, पानी है, इस तरह उनके आपको करैक्टर्स भी दिखाए हैं। तो ये जो पहाड़ का करैक्टर है, आप इसको देखें तो इसकी जो पहाड़ की शक्ल है और जो चाइनीज करैक्टर उसके लिए बनाया गया है, दोनों की शक्ल में काफी मुताबिकत है। और ये मैंने आप लोगों के लिए एक एक्स्ट्रा इमेज भी ऐड किया है। इसमें मून, सन, माउंटेन, वाटर, बर्ड, इनके करैक्टर्स शो किए गए हैं। तो अगर आप चांद का देखें या मून का करैक्टर देखें तो आप देखें कि वो चांद की मुख्तलिफ चांद की जो सूरत है, शक्ल है, उसको देख के वो चाइनीज करैक्टर बनाया गया। इसी तरह सूरज का जो करैक्टर है वो भी, और ये एक स्टेप में नहीं बने, ये डिफरेंट स्टेप्स में बने हैं, ठीक है। ये इन चाइनीज करैक्टर की जो एवोल्यूशन हुई है वो एक दिन की बात नहीं है, इसमें कई सदियां लग गई हैं। इसलिए शुरू में जब किसी ने फर्स्ट टाइम करैक्टर बनाया था तो उसने तो सूरज को वैसे सूरज ही बना दिया था। फिर क्या किया उन्होंने, उन्हीं डायग्राम्स को लिखने के लिए, लैंग्वेज को लिखने के लिए, राइटिंग करने के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया। तो जब उन्होंने लिखने के लिए उसको इस्तेमाल किया तो फिर वो डायग्राम्स स्टेप बाय स्टेप चेंज होती हुई आज जो आपके पास चाइनीज करैक्टर हैं उन सूरत में आपके पास आई हैं। तो इनको पिक्टोग्राफी या पिक्टोग्राम्स कहते हैं। इसी तरह वाटर, बर्ड, वाटर का देखें तो वो उन्होंने पानी के बह रहा है, बहते पानी की शक्ल बना के उन्होंने करैक्टर बनाया है। तो इसलिए आपको ये चाइनीज करैक्टर मुश्किल लगते हैं ना, बेसिकली ये मुश्किल तो ठीक है, आप नए हैं, सीख रहे हैं, लेकिन ये बड़े लॉजिकल हैं। इनके पीछे ना डायग्राम्स हैं, पिक्चर्स हैं, ये पिक्टोग्राम्स हैं, इनको हम पिक्टोग्राम्स कहते हैं। Now let's play again together. Please look at the picture and guess the characters. Which character is similar to the picture? Yes, the first picture is similar to the last character. What about the second one? The second picture is similar to the second character. Good job. And the last one? The last one is similar to the first character. Pictographic characters are simple and interesting, but some characters do not express what it means by pictographic characters. So, what should Asian Chinese do? Let's take a look at how the clever Asian Chinese people solve this problem. Boys and girls,
Pay attention to the characters on the pictures. This is a mu. And this is another mu. Now, if I put two mu together, what can I get? Well, we can get a new Chinese character, Ling. Now, I add a fire below the character Ling. Then it becomes Fen. The meaning of Fen at the very beginning is burning the jungle, as what we can see in the picture. The fire is below the jungle. Putting two characters together like this is called ideogram, and the character created in this way is called ideographic characters. So, in this way, we can guess the meaning of the new character. चाइनीज टीचर ने आपको अब दूसरी टाइप के चाइनीज कैरेक्टर्स के बारे में भी ब्रीफ कर दिया है। जो फर्स्ट टाइप थी वो तो पिक्टोग्राम थे ना, या उसमें यह था कि आप किसी लाइक माउंटेन है तो माउंटेन की जो शेप है वो देख के उसकी शेप का आप कैरेक्टर बना देते थे। दूसरी जो उनको पिक्टोग्राम्स कहते थे। दूसरी जो टाइप के कैरेक्टर्स हैं वो पिक्चर पे बेस तो करते ही हैं, लेकिन उनमें डायरेक्टली वो पिक्चर पे बेस नहीं करते, बल्कि उनमें एक आइडिया भी है। इसी वजह से उनको आइडियोग्राफिक या आइडियोग्राम्स भी कहते हैं। ये फॉर एग्जांपल उन्होंने आपको एक एग्जांपल दी है जलाने की, लकड़ी या जंगल जलाने की। इसमें एक करेक्टर है मू। मू जो है वो दरख्त को, लकड़ी को वो कहते हैं। तो दो मू इकट्ठे हों तो वो जंगल बन जाता है, उसको हम लिन कहते हैं। और जब लिन के नीचे फायर का करेक्टर आप ऐड करेंगे, हुआ का, आग का, तो इसका मतलब ये होता है कि जंगल को नीचे से आग लगा दी गई है। तो ये एक नया करेक्टर बनता है फन। तो इस तरह अब ये आइडिया है, इमेजेस तो हैं, पिक्चर्स तो इसमें है ही सही, मूव की या लिन की पिक्चर है, नीचे फायर की पिक्चर है, लेकिन इसमें अब एक आइडिया भी मर्ज कर दिया गया है। ठीक है, तो इसको आप आइडियोग्राफिक कैरेक्टर्स कहते हैं और इनको आइडियोग्राम्स कहते हैं। In fact, there is another way to form Chinese characters, which is simpler than these methods. Let's have a look. You can see the marks. When Asian people got a prey, they carved like this as a mark. If they got two preys, they carved twice. And the last one refers to the meaning of free. The Chinese character created in this way is called self-explanatory character. ये थर्ड टाइप के चाइनीज कैरेक्टर्स हैं जो बहुत सिंपल हैं, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी इनको कहा गया है, और ये हम भी अपनी लैंग्वेज में यूज करते हैं। ठीक है, वो एज अ राइटिंग सिस्टम नहीं करते, लेकिन ये जो सिंपल मार्क सिस्टम है ये हम भी यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने 1 लिखना हो तो हम 1 लिख देते हैं, 2 लिखना हो तो 2 लाइनें डाल दी, 3 लिखना हो तो 3 लाइनें डाल दी। तो ये जो आपको 3 कैरेक्टर इसमें दिखाए गए हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस है। ये जो फर्स्ट कैरेक्टर है ये 1 का है, ई नीचे वाला जो कैरेक्टर है ये आर 2 का है, और तीसरी जो 3 लाइनें हैं ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, यानी ये बहुत सिंपल है। इनमें आपको देख के ही पता चल जाता है कि ये इनका क्या मतलब है। यानी आप बेशक चाइनीज ना जानते हो, दुनिया के किसी खित्ते से रहने वाले हों, तो 3 लाइनें देखेंगे तो फौरन आपके जहन में यही ख्याल आता है कि ये 3 को इंडिकेट कर रहा है। तो ये सिंपल सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कैरेक्टर्स हैं। However, the free method we just mentioned are the earliest approaches, and there are few such Chinese characters. At least 18% of the Chinese characters are created in another way, which is the most convenient one for Chinese learning. The semantic phonetic compound character. One part of this Chinese character indicates the meaning, and the other part of this Chinese character indicates the pronunciation. For example, the pronunciation of this character is mu.
And the pronunciation of this character is also mu, but they have a little difference. The left part of this character means water. So the meaning of this character is shower. Then we will know the meaning of Ling, this character, with the left part like this, is related to water. Isn't it convenient? ये फोर्थ मेथड है जी, जो बहुत सारे चाइनीज करेक्टर इस मेथड पे बेस करके बनाए गए हैं। इसमें क्या होता है, इसमें आपको एग्जांपल दी गई है मू की, ठीक है, और साथ लिन की एग्जांपल दी गई है। ये वो दो करेक्टर्स हैं जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अच्छा, अब इन दोनों करेक्टर्स में देखें तो इनके नीचे जो करेक्टर्स लिखे हुए हैं वो भी इनसे बड़े सिमिलर हैं, उनमें थोड़ा सा इजाफा है। उनकी लेफ्ट साइड पे देखें तो आपको थोड़े से वो डिफरेंट नजर आएंगे, और वो जो डिफरेंस है वो बेसिकली वाटर को शो करता है, ठीक है। तो मू का जो करेक्टर है, अगर उसके नीचे वो वाटर वाला पोर्शन, यानी आप इस डिजाइन को देखेंगे ना तो आप आगे चल के हम इसको सिस्टमेटिकली भी देखेंगे। अभी जस्ट जो पॉइंट्स आपको बताए जा रहे हैं ना वो आपने देखने हैं। अभी डायरेक्ट इनको डिक्शनरीज में आपने नहीं देखना, मीनिंग्स वगैरह वो बाद में हम सारा कुछ करेंगे। अभी जस्ट आपको ये बताया जा रहा है कि चाइनीज कैरेक्टर एवॉल्व कैसे हुए हैं। तो अभी जो बातें बताई जा रही हैं सिर्फ उन पे गौर करना है। तो ये जो लेफ्ट साइड वाला पोर्शन है इस करेक्टर में, जो इजाफी नीचे वाले करेक्टर में ऐड किया गया है, ये आप गौर से देखें तो ये दोनों में सेम है, और ये लिन और मू दोनों में एक जैसा ही है, और ये वाटर को जाहिर कर रहा है। इसी तरह लिन आपको पता है जंगल को कहते हैं। अच्छा, वो मुंह वाला तो शावर है ना, वो टीचर ने आपको बताया है कि इसका मतलब ये था कि वो शावर ले रहा है। अच्छा, उसके बाद है लिन। लिन जंगल को कहते हैं, और जंगल के साथ पानी हो तो जंगल में पानी कैसे आता है, बारिश से आता है। तो इसलिए उसके मीनिंग्स जो है वो चेंज हो गए हैं। दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम है, प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस नहीं है। जस्ट उनकी डिफरेंस कहाँ पे आया है, डिफरेंस आया है उनके वो जो लेफ्ट साइड पे जो पार्ट एक्स्ट्रा ऐड किया गया ना, जो वाटर को शो कर रहा है। तो ये इस तरह के जो करेक्टर्स हैं इनको सिमेटिक फोनेटिक कंपाउंड करेक्टर्स कहते हैं, ठीक है। ये Above are the four methods of the formation of Chinese character we have just learned. And these are the most commonly used method in China. Since we have learned the formation of Chinese character, it's time for us to learn the structure of Chinese character. Now, please look at these two Chinese characters. Do they look like the same? You are so smart, they are different. These two Chinese characters both indicate a complete meaning respectively, and the later one can be split into two single characters. If we know how to split Chinese characters, isn't it not too difficult to memorize Chinese characters? Apart from this, it can help us guess the meaning of Chinese characters. The method is very useful for your study. Such characters are called single component characters. As we can see, these characters cannot be divided into two other characters or cannot be divided into two parts. So they are called single component characters. We can memorize how to write them stroke by stroke in the following class. Don't be worried, we will learn it in part C. Now it is time to be more energetic. Let's analyze the structure of these Chinese characters together. Mu consists of the left side and the right side, so it is a left-right structure. As for Ling, it contains the left side and the right side, so it is also a left-right structure. These examples may be a little difficult for you. We can do it together.
link concludes the left, the middle, the right side. Thus, it is a left, middle, right structure. As for this one, fen includes the top and the bottom. Therefore, this is called top-bottom structure. Today, we have learned 4 structures of Chinese character. We will learn more in the following classes. According to today's classes, we know that Chinese character indicates meaning. The tool is very convenient for recording Chinese character. चाइनीज टीचर ने आपको चाइनीज कैरेक्टर्स के स्ट्रक्चर के बारे में बताया है और इसमें आपने देखा है कि कुछ तो बहुत सिंपल कैरेक्टर्स हैं, जस्ट मतलब उनको आप बड़े सिंपल से अंदाज में लिख सकते हैं. उनको हम सिंगल कंपोनेंट कैरेक्टर्स कहते हैं. लेकिन कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो कॉम्बिनेशन से बने हुए हैं, जो कंपाउंड कैरेक्टर्स हैं. उनमें एक सिंगल कैरेक्टर नहीं है बल्कि एक से ज्यादा सिंगल कैरेक्टर मौजूद हैं और उनको कंबाइन कैसे किया जाता है उसके लिए डिफरेंट स्ट्रक्चर है. लेफ्ट राइट है, लेफ्ट राइट है, लेफ्ट मिडल है, राइट टॉप बॉटम है. तो ये 3-4 अप्रोचेज हैं. तो उनके जरिए क्या है जी, इनको कंबाइन किया जाता है, कंपाउंड स्ट्रक्चर में लाया जाता है. तो ये अभी तो आपको जस्ट एक आइडिया देने के लिए बताया गया है. आगे चल के हम इनके जब स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि इनको हमने ड्रॉ कैसे करना है. उसके भी स्पेशल मेथड होता है. जैसे आप अपनी लैंग्वेज में आप ABC लिखते हैं या अलिफ बे लिखते हैं तो एक खास तरतीब से लिखते हैं. तो इसी तरह इनके जो पार्ट्स हैं कैरेक्टर्स के, जो कंपाउंड कैरेक्टर्स हैं या सिंगल कैरेक्टर भी इवन है, तो उसके भी स्ट्रोक्स होते हैं. ठीक है, वो स्ट्रोक से मुराद ये है कि आप एक दफा कलम जब लिखते हैं, ऊपर पेपर पे रखते हैं, तो जितने तक उसको उठाते नहीं है वो एक सिंगल स्ट्रोक होता है. जैसे आप बे लिखते हैं तो बे आप 2 स्ट्रोक्स में लिखते हैं. एक में बे लिखते हैं, दूसरे स्ट्रोक में आप उसका नुक्ता डालते हैं. तो इसी तरह चाइनीज स्ट्रक्चर जो है, कैरेक्टर का स्ट्रक्चर्स, वो भी स्ट्रोक्स के हिसाब से लिखते हैं. तो वो स्ट्रोक्स की सीक्वेंस क्या होती है, वो स्ट्रोक्स की कैसे लिखे जाते हैं, ये हम नेक्स्ट इंशाल्लाह लेसन्स में स्टडी करेंगे. अभी जस्ट आप ये समझ लें कि कुछ सिंपल होते हैं, कुछ कंपाउंड होते हैं. कंपाउंड होते हैं तो वो कैसे कंपाउंड होते हैं, तो इसकी डिटेल्स हम आगे चलकर देखेंगे. You can know what it means without knowing the pronunciation. How magical, interesting Chinese character is. Do you agree with me? In part B, we will learn another two, the Chinese pinyin. So this is the end of this part. So much for today. Thank you for listening. Goodbye, everyone. Hello everyone, welcome to Tang Chinese class. Lesson 1, Part B. जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हर लेसन के 3 पार्ट्स होते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी. फिर हर पार्ट में हो सकता है एक वीडियो, हो सकता है एक से ज़्यादा वीडियोस हों. तो ये वीडियो जो है ये पार्ट बी की फर्स्ट वीडियो है. अभी जो लेसन 1 है, ये जो नी हाओ लेसन है, जिसका नाम नी हाओ है, ये इसके पार्ट बी की एक ही वीडियो है. हो सकता है आगे चल के जो लेसन्स आएँ उनमें पार्ट बी की फिर एक से ज़्यादा वीडियोज़ हों. तो हम इस वीडियोज़ को देखना शुरू करते हैं और फिर साथ साथ इसको हम एक्सप्लेन करते जाएंगे. In Part A, we have learned that Chinese characters are made to represent some meanings. Also, it is a convenient tool to record Chinese, as the pronunciation and meaning are 2 separated parts. So you can know what the character means without its pronunciation. But if you want to know the pronunciation, here comes another tool, pinyin, which is used to help us remember the pronunciation. Also, pinyin uses the Roman alphabets as well. इस वीडियोस में हमें चाइनीज़ टीचर
पिनियन सिस्टम के बारे में बताने जा रही हैं। पिनियन सिस्टम एक प्रोनाउंसिएशन सिस्टम है चाइनीज़ लैंग्वेज का। हम इन पिनियंस को यूज़ करके चाइनीज़ करैक्टर्स को प्रोनाउंस करते हैं। यानी चाइनीज़ करैक्टर्स से हमें ये नहीं पता चलता कि उनकी आवाज़ कैसी होगी, उनकी प्रोनाउंसिएशन कैसी होगी। तो उनकी प्रोनाउंसिएशन को समझने के लिए हम पिनियन सिस्टम यूज़ करते हैं। ये इंग्लिश और उर्दू में तो इस तरह नहीं होता। इंग्लिश और उर्दू में तो हमें अल्फ़ाबेट्स को देख के उनकी साउंड्स का पता होता है, लेकिन चाइनीज़ करैक्टर्स में चाइनीज़ करैक्टर्स जो है वो राइटिंग सिस्टम है, वो आप राइट करते हैं। अब उनकी आवाज़ें कैसे निकाली जाती हैं, उनकी प्रोनाउंसिएशन कैसे होती है, ये इसके लिए हम एक और सिस्टम यूज़ करते हैं। उसको हम पिनियन सिस्टम कहते हैं। तो पिनियन सिस्टम क्या होता है, ये चाइनीज़ टीचर आपको बताएंगी। For example, the pronunciation of these two Chinese characters is 你好. How's the pronunciation recorded in Pinyin? You see, there are three parts: initials, finals, and tone. Unlike English, the tone of Chinese follows every character. Same character but different tones will lead to different meanings. Okay, let's continue the structure. You may see in one syllable, initials is put in the front. The following is the finals. And the tone is written above the finals. Well, you may wonder how many tones are there in Chinese. The answer is 4. पिनियन सिस्टम क्या होता है, अभी चाइनीज़ टीचर ने इसको एक्सप्लेन किया है। आप इस स्लाइड में देख सकते हैं कि यहाँ पे नीचे लेफ्ट साइड पे आपको दो चाइनीज़ करैक्टर्स नज़र आ रहे हैं। एक करैक्टर है नी और दूसरा है हाओ। लेकिन आप अभी चूंकि लर्न कर रहे हैं, आप अभी इनिशियल स्टेजेस पे हैं, तो आप करैक्टर्स को देखकर उनको प्रोनाउंस नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए इनको प्रोनाउंस करने के लिए जो प्रोनाउंसिएशन सिस्टम चाइनीज़ यूज़ करते हैं उसको पिनियन सिस्टम कहते हैं। और उसमें आप ऊपर देख सकते हैं कि ये NI है और HAO है। अभी मैं इसको कह देता हूँ ये इंग्लिश वाले NI हैं, क्योंकि आपने तो इंग्लिश वाली जो अल्फ़ाबेट्स हैं ABC वो स्टडी किए हुए हैं। तो ये चाइनीज़ ने भी उन्हीं अल्फ़ाबेट्स, उन सबको नहीं, उनमें से कुछ को पिनियन सिस्टम में अडॉप्ट किया है, और कुछ की आवाज़ें जो हैं वो वही हैं जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स की हैं और कुछ की डिफरेंट है। ये आगे चलकर हम जब इन पिनियंस को देखेंगे तो फिर आपको क्लियर होगा। तो अभी वो कहते हैं जी कि ये जो एक कंप्लीट पिनियन है जो एक किसी करैक्टर को रिप्रेजेंट करता है उसको हम सिलेबल कहते हैं। तो उसमें सिलेबल में 3 चीज़ें हैं फर्दर, इनिशियल्स हैं, फाइनल्स हैं और टोन्स हैं। तो अगर हम एक करैक्टर नी को देखें तो इसमें एन जो है ऑरेंज कलर का है और हाउ में एच जो है ये इनिशियल्स हैं। इसी तरह नी में आई और हाउ में ए ओ आओ जो है वो फाइनल्स है। और उनके ऊपर जो सिंबल्स आपको नजर आ रही हैं आई और ए के ब्लू कलर की, ये टोन्स हैं और टोन्स की जो तादाद है वो 4 है। तो ये इनिशियल्स, फाइनल्स और टोन्स मिला के एक कंप्लीट पिनियन सिलेबल बनाते हैं और उसको फिर हम यूज करते हैं करैक्टर्स को प्रोनाउंस करने के लिए। Initial is one of the components for pinyin. However, pinyin sometimes has no initial. Can pinyin be formed without initial? Yes, it can. For example, 饿, the pinyin of 饿 means hungry. You see, there is no initial. अच्छा, इसमें आप एक और पॉइंट भी नोट कर लीजिए। चाइनीज टीचर का कहना है कि पहले तो हमने स्टडी किया ना कि एक पिनियन सिलेबल जो बनता है
जो एक चाइनीज करैक्टर को प्रोनाउंस करने के लिए बनता है। हमने उसकी एग्जाम्पल देखी, एक नी था, दूसरा हाओ था। तो उसमें 3 चीजें शामिल थी, इनिशियल थे, फाइनल थे, टोन्स थी। अच्छा, अब लाजमी नहीं होता कि हर फिनियन सिलेबल में ये तीनों चीजें कंपलसरी है। इन सम केसेस कुछ ऐसे भी चाइनीज कैरेक्टर्स हैं जिनमें सिर्फ फाइनल और टोन से भी काम चल जाता है, उसमें लाजमी नहीं होता कि इनिशियल्स हों। आप ये एक चाइनीज कैरेक्टर देख सकते हैं इस स्लाइड में जो दिखाया गया है, ये है अ। अ जो है वो एक बड़ा वेल नोन कैरेक्टर है। हंगरी को कहते हैं जी, मुझे भूख लगी है, ओ अ वाला। तो इसमें आप देखते हैं इसमें इनिशियल नहीं है, सिर्फ इंग्लिश ई नजर आ रही है जिसकी चाइनीज साउंड है अ, और ये 4th टोन में है। टोन इसकी आप ऊपर देखें ना, टोन सिंबल नी वाला जो है वो 3rd टोन में था। 4 टोन्स हैं, अभी हम इनको देखते हैं डिटेल्स में, टोन्स 1st, 2nd, 3rd और 4th टोन कैसी होती हैं। तो बहरहाल ये अ जो है ये 4th टोन में है और सिर्फ एक फाइनल है, इसमें इनिशियल नहीं है। तो ऐसे एक आपको कैरेक्टर्स भी देखने को मिलेंगे कि जिनमें लाजमी नहीं है कि तीनों चीजें हों, उनमें इनिशियल स्किप भी हो सकते हैं। Now let's look at the finals. Which we mentioned before, is a simple final, one of the 6 simple finals in Chinese. With learning these 6 simple finals, almost all the finals in Chinese will not be a problem. Have you noticed under these 6 finals are 2 mouths? What do these 2 mean? This tells us that when these 6 finals are pronounced, the shape of mouth is from big to small. Now look at my mouth. A, O, E, U, Yu. You can consider the first 3 are big sisters and the second 3 are little sisters to remember the mouth shapes. चाइनीज टीचर ने आपको फाइनल्स के बारे में बताना शुरू किया है। तो फाइनल्स सबसे पहले तो उन्होंने आपको ये बताया है जो सिंपल फाइनल्स हैं। ठीक है, सिंपल फाइनल्स से क्या मुराद है? सिंपल से मुराद ये है कि आपने, अगर आपको याद हो, जब हमने 2 चाइनीज कैरेक्टर्स नी हाओ पढ़े थे, तो नी में जो है वो इंग्लिश आई थी एज अ फाइनल, और हाउ में जो है वो सिंगल अल्फाबेट नहीं थे। अभी तक तो मैं अल्फाबेट और इंग्लिश आई ई कहता आ रहा हूँ क्योंकि आपने पढ़े ये हैं। अदरवाइज जब आप इनको पढ़ लेंगे ना, तो फिर आपने इनको इंग्लिश वाला जो आपके जहन में है ना एक कंसेप्ट, वो आहिस्ता आहिस्ता से निकल जाएगा। तो उसमें हाउ में आपने देखा था कि 2 ए भी था और ओ भी था। तो ये जो सिंगल है ये सिंपल है, जिस तरह नी में आई था। तो ये 6 हैं, ठीक है। और इनमें से टीचर ने आपको ये भी बताया है कि इनको प्रोनाउंस करने के लिए, इनको बोलने के लिए आपने सबसे ज्यादा जो है वो माउथ ओपन करना है आ के लिए। आ ओ अ, ये सिंपल है, मतलब ये आसान है। एक तो वैसे सिंपल है ना, 6 के 6 सिंपल ही हैं। आगे वो कॉम्बिनेशन में भी आएंगे, वो भी देखते हैं हम। तो इनमें कुछ जो बहुत आसान है आपके लिए, इंग्लिश से मिलते जुलते हैं, वो तो है आ ओ। इनकी साउंड्स इंग्लिश वाली जो अल्फाबेट्स हैं उनसे मिलती जुलती हैं। कुछ जो है वो जिस तरह वो एंड वाले हैं यू, वो जरा डिफरेंट है, वो थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो ये एक ट्रेंड भी है कि सब आपने बोलना है तो आपको सबसे ज्यादा मुंह खोलना पड़ेगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे चलते जाएंगे तो मुंह थोड़ा खोलना पड़ेगा। अच्छा, इसमें एक और चीज भी है, आपको YouTube पे बहुत सारी प्रोनाउंसिएशन की वीडियोस मिल जाएंगी। ये बड़ी अच्छी वीडियोस हैं। इनमें ये बताया जाता है कि आपने लिप्स खोलने हैं, बंद करने हैं, आपकी किसी खास जो है फिनियन को बोलने के लिए, फाइनल या इनिशियल को बोलने के लिए टंग या जबान की क्या पोजीशन होनी चाहिए।
तो ये हमने कभी गौर नहीं किया, हम चूंकि बचपन से उर्दू और इंग्लिश सीखते आए हैं, लेकिन अगर आप गौर करें ना तो इंग्लिश ABC और उर्दू हरूफ तहजीज या अल्फ़ाबेट्स अल्फ़बे उनकी भी आवाज़ें निकलने के लिए ना हमारे ये होंठों की, हमारी ज़बान की और मुंह के जितने भी हिस्से हैं उनकी एक खास पोजीशन होती है। तो आपको ऐसी बहुत सारी अच्छी वीडियोस मिल जाएंगी जहाँ पे इनकी आवाज़ें निकालने के लिए वो बाकायदा आपको गाइड करते हैं कि आपके होंठ खुले होने चाहिए, बंद होने चाहिए, ज़बान की क्या पोजीशन होनी चाहिए। तो ये वीडियो ज़रूर देखें क्योंकि ये जो प्रोनाउंसिएशन है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बहरहाल जहाँ पर आपको चाइनीज़ टीचर ने इन 6 सिंपल फाइनल्स के बारे में बताया है और नेक्स्ट वो आपको इनकी आगे जो कॉम्बिनेशन में आते हैं उनके बारे में बताने वाली हैं। Among these, A and E are the simplest one, which can be found in many languages. A is the same with English, like the vowel in farm, arm. E is the same with E in English, like the vowels in sea, meat. However, there is no U in English, but we can pronounce E as long as the mouth is round and the tongue stays still. Then it's U. So repeat after me. E, U. With the 2 dots above missing, you'll get U, the same with the vowel in put. Here's the we have learned before. Please attention that this final is produced from the middle of the mouth or a little bit forward. Backward position near the throat is not true. Actually, this final is not hard to pronounce, as if you are smiling. After learning about let's round our mouth to do the last simple final, wo. Let's say, wo, wo, Till now, we have finished the studies on the 6 simple finals. Each has its own circle friends to form the compound finals. This slide shows the table of all the compound finals. E have the largest circle of friends, while Wo has only 2. We can gradually learn about recognizing compound finals. But what I want to tell you today is that in Chinese, no matter how long the finals look, the lasting of articulation are the same. When these finals are articulated, the tongue position keeps changing in a sliding rather than a jerking manner. Listen to me. आपने 6 सिंपल फाइनल्स देखे थे और अब ये जो आपको स्लाइड में फाइनल्स नजर आ रहे हैं ये कंपाउंड फाइनल्स हैं और कंपाउंड फाइनल्स में आप देख सकते हैं कि फाइनल्स ये सिंपल फाइनल्स की तरह सिंगल नहीं है बल्कि ये कॉम्बिनेशन में है। अच्छा, अब इसमें मैं 2 चीज़ें आप लोगों को बताना चाहता हूँ। एक तो ये है कि आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इनकी साउंड्स को प्रोनाउंस करने के लिए। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इनकी एग्जैक्ट साउंड्स उस वक्त पता चलती हैं जब आप इनको इनिशियल्स के साथ मिला के और ऊपर टोन्स भी ऐड करके पढ़ते हैं, तो तब जाके आपको ना क्लियर होता है और प्रैक्टिस होती है, बार-बार आप बोलते हैं, तो आपको अंदाज़ा होता है कि इनकी एग्जैक्ट साउंड्स क्या हैं। और एक चीज़ मैं आपको साथ वैसे बताता चलूँ कि ये जो इस वीडियो में सबटाइटल्स आ रहे हैं, ये ऑटो जनरेटेड है, ठीक है? ये ऑटो जनरेटेड का मतलब होता है कि ये वीडियो की जो साउंड है उसको सुन के सॉफ्टवेयर ऑटो जनरेट करता है। तो सम टाइम जब ये आवाज़ें निकाल रही होती हैं टीचर, तो वो चूँकि चाइनीज़ में है ना और सबटाइटल इंग्लिश में है, तो वो आवाज़ों को सबटाइटल में प्रॉपरली नहीं लिख पाता सॉफ्टवेयर। तो इसलिए कहीं-कहीं सबटाइटल्स में जो है वो आपको मिस्टेक्स नज़र आएँगी।
a, o, yao, not e-ao, but yao, wang, not u-ang, but wang. Each of them is one beat without separation between letters. अच्छा, यहाँ पे आपको चाइनीज टीचर ने ये बताया है, जो मैंने भी आपको बताया था, कि इनको जब जोड़ के पढ़ेंगे ना, इनिशियल्स फाइनल को आपस में मिला के, इसको कहते हैं आर्टिकुलेट। यानी दोनों को आप जोड़ के पढ़ेंगे, कंबाइन करके पढ़ेंगे, तो फिर जो है इसकी एग्जैक्ट आवाज आपको पता चलेगी। We have just said that the mouth shapes of these 6 simple finals are from big to small, and a, o, e, u, yu are sequenced from the most significant to the least. What does the significance mean? It's a matter of strength to grab the tone and put it on its head, because tone marks are written above the main vowel of a syllable in Chinese. अच्छा, अब चाइनीज टीचर आपको टोन्स के बारे में ब्रीफ करने जा रही हैं। और एक चीज़ तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो ऑटो जनरेटेड सबटाइटल आ रहे हैं नीचे वीडियो के, इसमें टोन्स को बाज़ औक़ात टॉम भी लिखा हुआ है, जिसे मकबरा आप कहते हैं, मज़ार मकबरा, तो इसलिए ना उसकी करेक्शन कर लीजिएगा। अच्छा, टोन्स आती हैं फाइनल्स के ऊपर, तो आपने नी में भी देखा, हाओ में भी देखा, और इवन एक करेक्टर हमने विदाउट इनिशियल एग्जांपल दी थी की, उसमें भी टोन जो है वो फाइनल के ऊपर थी। और फिर ये जो है आ, ओ, ये वो फाइनल्स हैं जो सबसे ज्यादा यूज होने वाले हैं, तो इसी वजह से अक्सर आपको एग्जांपल्स में भी इन्हीं के ही पीनियन सिलेबल नजर आएंगे। तो फाइनल के ऊपर चूंकि टोन आती है, तो इसलिए दोबारा फाइनल्स का जिक्र किया जा रहा है। तो नेक्स्ट स्लाइड में टीचर आपको टोन्स के बारे में बताएगी कि फर्स्ट टोन, सेकंड, थर्ड जो है, फोर्थ टोन कैसी होती है। For example, a is always the easiest to grab the tone. So, how do these 4 tones come out? Listen to me. I, I, I. To remember these 4 tones, we gave them their own color. The first tone is flat. I, like the green grassland on the Tibetan plateau. The second one is upward. I, then yellow, like an upper stretch of mountains. The third tone is first down and then up. I, it's blue, like the changeable ocean. The fourth goes from the top to the lowest. I, like a fairy meteor falling from the sky to the ground. इस स्लाइड में आपको चाइनीज टीचर ने टोन्स के बारे में बताया है कि टोटल 4 टोन्स हैं। पहली टोन फ्लैट होती है, दूसरी जो है वो राइजिंग टोन होती है। पहली टोन में फ्लैट मतलब कि कोई आप आवाज में उतार चढ़ाव नहीं होता। दूसरी टोन में राइजिंग टोन होती है, आप अपनी आवाज को स्लो रखते हैं स्टार्ट में, लेकिन फिर उसको इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं। तीसरी टोन जो है वो उसको डिप टोन भी कहते हैं, थर्ड टोन को। इसमें क्या होता है, आवाज आप कम करते हैं और फिर दोबारा ज्यादा करते हैं। पहले थोड़ी सी ज्यादा होती है, फिर उसको डिप देते हैं, कम करते हैं। जैसे नी में था, नी, आप उसको ना फिर ज्यादा कर देते हैं। फोर्थ टोन में क्या होता है कि आप ऊपर से नीचे आते हैं, आपकी आवाज ज्यादा होती है और फिर उसके बाद आवाज आपकी कम हो जाती है, तो ये फोर्थ टोन होती है। तो फोर्थ टोन में ये अभी तो आपने जस्ट टोन्स का आपने एक ब्रीफ से इंट्रोडक्शन पढ़ा ना। एक्चुअली तो जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे डिफरेंट इनिशियल्स और फाइनल्स को मिला के ओपिनियन की, टोन्स की, तो फिर उस वक्त आपको ज्यादा चीजें क्लियर होंगी। अभी सिर्फ आप समझ लें कि टोन्स कितनी होती हैं, उनकी आवाजें कैसे निकाली जाती हैं। Finally, let's look at initials in Chinese.
I'll first read these initials for you. 波 坡 摸 佛 的 特 呢 了 个 科 和 鸡 七 西 滋 呲 丝 知 吃 诗 日 चाइनीज टीचर ने अब आपको इनिशियल्स का इंट्रोडक्शन भी करवा दिया है और आपको ये बताया है कि कौन कौन से इनिशियल्स होती हैं और उनकी साउंड्स क्या है। तो इसमें एक चीज आपने नोट की होगी कि फाइनल्स की तरह ये सारे सिंगल हैं, जिस तरह सिंपल फाइनल्स थे ये उनकी तरह सिंगल ही हैं और इनमें कोई आपको कॉम्बिनेशन वाले जो है वो नजर नहीं आ रहे। और इसमें अभी तो ये एक इंट्रोडक्शन है, आपको एक एक फाइनल और इनिशियल की साउंड को प्रैक्टिस करने में अच्छा भला वक्त लगेगा। जिस तरह आपके उर्दू के ये इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स हैं, अगर आपको याद हो जब आपने बचपन में ये स्टार्ट किए थे तो आपने सारे अल्फ़ाबेट्स एक ही वक्त में उनको याद नहीं कर लिया था, उनकी प्रोनाउंसिएशन नहीं सीख ली थी। आप ABC या अलिफ बे आपका जो रोजाना का होमवर्क होता था वो इस तरह होता था कि 1 2 2 आपको इस तरह अल्फ़ाबेट्स दिए जाते थे। तो अब आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है। इसका मटेरियल आपको ये बाद में भी आने वाली नेक्स्ट क्लासेस में भी दिया जाएगा। तो ये आपको एक एक अल्फ़ाबेट, ये चाइनीज अल्फ़ाबेट कह लें, फिनियन कह लें या इनिशियल्स फाइनल्स कह लें, इनकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। Before that, let's learn about the biggest difference between Chinese initials and English consonants. As soon as we look at this table, you will see the difference. There is no such voiced consonants like b, d, g, v, z, zh in the initials of Chinese. That is to say, when we see the initials bo, de, and ge, it should be pronounced voicelessly. And when we see the po, te, and ke, the pronunciations should be come out with more air pushed out. Aspirated or not is an important point, which will lead to different character with different meaning. यहाँ पे चाइनीज टीचर ने आपसे 2 पॉइंट्स शेयर किए हैं। एक तो ये है कि इंग्लिश और चाइनीज ये जो अल्फ़ाबेट्स हैं, ओपिनियंस हैं, इनकी साउंड सेम नहीं होती हैं। ये चीज़ मैंने भी आपको पहले बताई है। आप शुरू में कन्फ्यूजन का शिकार होंगे, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि जब इंग्लिश पढ़ रहे हो तो इंग्लिश वाली साउंड्स निकालें, जब चाइनीज पढ़ रहे हो तो चाइनीज वाली साउंड्स निकालें। दूसरा जो पॉइंट है वो एस्पायरेटेड और अनएस्पायरेटेड साउंड्स का है। आप उर्दू में देखें तो एक होती है पे, तो दूसरी होती है फे। पे और फे में आप देखें ना, इनकी जब आप आवाज निकालते हैं तो इनमें क्या डिफरेंस होता है। फे की आवाज जब निकालते हैं ना तो वो ज्यादा फेफड़ों से हवा निकालते हैं, ठीक है, फे। इसी तरह ते और थे, तो ये एस्पायरेटेड और अनएस्पायरेटेड वॉइसेस हैं। Like po, po, which form the pinyin of ba and pa. These two represents totally the different things. Ba means father, and pa means afraid. So everyone must pay attention to pronounce these well. Let's make a conclusion. Here are 6 aspirated initials in Chinese. अच्छा, ये 6 जो है जो आपको नजर आ रहे हैं रेड कलर में हाईलाइट किए गए इनिशियल्स, ये एस्पायरेटेड साउंड्स हैं। मसलन मैं आपको बताता हूँ कि ये इंग्लिश बी और इंग्लिश पी जो आपको नजर आ रही है, इंग्लिश बी की जो चाइनीज साउंड है वो है पोआ पोआ, और जो इंग्लिश पी आपको नजर आई है ना, चाइनीज में इसकी साउंड है फुआ
फुआ फुआ जो है वो फे वाली साउंड आती है, तो इस वजह से ये एस्पायरेटेड इनिशियल्स हैं 6। तो ये इनकी प्रैक्टिस तो खैर अभी आप करेंगे, अभी यह जस्ट इंट्रोडक्शन है, इसलिए ये आपने परेशान नहीं होना कि ये हमें पता नहीं हम कैसे याद करेंगे। अभी आप आगे चल के इनकी प्रैक्टिस करेंगे। The studies on Chinese character and tones, two most interesting parts of Chinese, is over today. You can use the platform to do exercises and prepare for the next lesson to start learning speaking Chinese. Let's look forward to it. Thank you guys and see you next time. ये थांग 1 लेसन 1 पार्ट सी की वीडियो है। इस वीडियो में चाइनीज टीचर आपको चाइनीज करैक्टर्स के बारे में बताएंगे, उनकी ये करैक्टर्स लिखे कैसे जाते हैं, वो उनका स्ट्रोक आर्डर क्या होता है, किस सीक्वेंस से लिखे जाते हैं, और उससे पहले ब्रीफली आपको ये भी बताएंगे कि चाइना में जो एक स्टैंडर्ड एक्सेंट है, यानी एक जो लहजा है वो कौन सा है, क्योंकि चाइना आपको पता है एक बहुत बड़ा मुल्क है, 1.34 बिलियन उसकी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे बड़ा मुल्क है, और इसी तरह ये लोग काफ़ी दूर दराज इलाकों में भी रहते हैं, रकबा भी चाइना का काफ़ी ज़्यादा है। तो ये एक बड़ी कुदरती सी बात होती है कि ख़ास फासले के बाद इंसान की जो लैंग्वेज है उसमें तब्दीली आना शुरू हो जाती है। तो चाइना में मुख्तलिफ इलाकों में जो चाइनीज़, कहने को तो वो चाइनीज़ बोली जाती है, लेकिन उनका लहजा या जो डायलेक्ट है वो डिफरेंट होता है। तो जब वो लोग आपस में एक दूसरे से, खुसूसन जब दूर दराज इलाकों के एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, तो वो उनको बड़ी दुश्वारी पेश आती है कि वो एक दूसरे की ज़बान समझ पाएं। तो इस वजह से चाइना ने एक स्टैंडर्ड एक्सेंट जो है वो चुना है, जिसको मैंड्रियन कहते हैं, और ये पूरे मुल्क के लिए एक सरकारी या कौमी डायलेक्ट या लहजे के तौर पे माना जाता है। तो इसके बारे में चाइनीज टीचर आपको ब्रीफ करेंगी, तो आइए चलकर हम वीडियो देखते हैं। Hello everyone, welcome to Tang Chinese class. Lesson 1, Part C. In Part A and B, we understand the characteristics of Chinese characters and what pinyin is. We also know that China is a vast land. So, do all Chinese people say the same language? Not really. There are a number of dialects in China. Well then, how many are there? This is the map of China. How many colors do you see on this map? Each color represents one dialect. Let's have a listening. What are Chinese dialects like? 你好，你黄外汕呢？你好，你叫啥名啊？你好，你叫啥子名字？你好，你叫么子名字？好，哈嘛个名字？你好，你叫咩名啊？ Do these dialects sound very different? Even the number of tones is not the same. Some of them are 4, some are 5, while some are even more than 10. Under this, can the Chinese understand each other's dialect? The answer is no. So here comes Mandarin for communication. Which is the kind of Chinese you want to learn? The pronunciation of Mandarin is originated from Beijing dialect, as Beijing is the capital of China. And of course, another reason is that most Chinese understand and learn Beijing dialect easily with only 4 tones. Surely, the vocabulary of Mandarin comes from all over the country, but mainly from the northern dialects, because some of the words spoken by the southerners
are hard to pronounce in Mandarin. Fortunately, Chinese characters are the same all over the country. If you don't understand the words people saying, you can write them down to communicate. Therefore, writing Chinese letters is a very important ability. Now let's learn how to write Chinese characters. Chinese characters are made up of strokes. The stroke numbers of characters are not the same. For example, this Chinese character has only one stroke, and there are many strokes in these characters. Gee, is it so difficult? Don't worry. In fact, there are only several basic strokes in Chinese. You see, as long as you've learned 6 basic strokes, writing Chinese characters will not be a problem. अच्छा, पहले थोड़ा सा आपको वो डायलेक्ट्स के बारे में बताया गया, लहजों के बारे में बताया गया। स्टैंडर्ड जो लहजा है वो बीजिंग का है, जिसको मैंड्रियन कहते हैं। अच्छा, अब हम चाइनीज कैरेक्टर्स को लिखने के बारे में बात करते हैं। चाइनीज टीचर ने आपको बताया है कि चाइनीज कैरेक्टर को जब लिखा जाता है तो उसके लिए हम स्ट्रोक्स यूज करते हैं, और ये जो आपको इमेज नजर आ रहे हैं, ये 6 बेसिक स्ट्रोक्स हैं। हम इन्हीं कोई कॉम्बिनेशन बना के चाइनीज कैरेक्टर को लिखते हैं, और इसमें अगर आपने गौर किया हो कभी, तो हम अपनी हरूफ तर्जी उर्दू की या इंग्लिश की ABC, इनको भी स्ट्रोक्स की फॉर्म में लिखते हैं। इनके स्ट्रोक्स कोई बहुत ज्यादा वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि वो तो बड़े बड़े सिंपल है लिखने में, लेकिन चाइनीज कैरेक्टर्स थोड़ा सा उस तरह सिंपल नहीं है जिस तरह इंग्लिश अल्फाबेट्स हैं या उर्दू है। तो वरना तो स्ट्रोक्स आप पहले भी लिख देखे ना, आपने बे लिखनी है तो बे में 2 स्ट्रोक है, एक बे लिखते हैं फिर नुक्ता डालते हैं। और स्ट्रोक जो होता है ना, एक्चुअली एक आप जब लिखना शुरू करते हैं तो पेन जब पेपर पे लगाते हैं तो उस वक्त तक, जब तक आप उसको पेपर से उठाते नहीं है, एक सिंगल स्ट्रोक होता है। तो इस तरह चाइनीज के जो है ये 6 बेसिक स्ट्रोक्स हैं, इनको यूज करके आगे कैसे हम चाइनीज कैरेक्टर्स को लिख सकते हैं, ये चाइनीज टीचर आपको ब्रीफ करेंगी। Next, we will learn how to write these basic strokes one by one. The first one is horizontal, 横, written from left to right, and write it with me. Very simple, isn't it? The second one is vertical, 竖, written from top downward to bottom. Let's write it together. The third one is dot, 点. Write it with me and please draw it on the paper gently. It's short and oblique, like a much shorter horizontal or vertical strokes, but stewed. The fourth and the fifth are simpler. When writing vertically from top to bottom right, then you'll get a downward left, 撇. And from top to bottom right is downward right, 捺. The last one is vertical hook, 钩, which is to stop writing vertically and upward hooking to the upper left corner. Sometimes it can also be a horizontal hook. After learning these basic strokes, have you noticed that the basic ones are horizontal and vertical, then the dot? Other strokes can be seen as a combination of horizontal, vertical, and dots. चाइनीज टीचर ने आपको डिफरेंट स्ट्रोक्स के बारे में बताया। ये बेसिक स्ट्रोक्स हैं जो आप किसी भी कैरेक्टर्स को लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं।
अब इससे भी एक जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है इन स्ट्रोक्स की सीक्वेंस, जिसे हम स्ट्रोक ऑर्डर कहते हैं। आप जैसे उर्दू में अलिफ बे पे ते अरूफ तजी लिखते हैं, ये बी सी लिखते हैं, तो आपने देखा होगा कि जब बच्चे शुरू में सीख रहे होते हैं तो वो बड़े अजीब तरीके से लिखते हैं। ठीक है, वो जो चीज़ पहले लिखनी होती है उसको बाद में लिख देते हैं, लेकिन कुछ अरसे बाद वो सीख जाते हैं तो फिर ठीक लिखना शुरू कर देते हैं। तो इसमें उर्दू में भी और इवन इंग्लिश में भी एक खास तरतीब से आप लिखते हैं अल्फ़ाबेट्स को। तो चाइनीज़ करैक्टर में ये और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि चाइनीज़ करैक्टर्स में स्ट्रोक्स बहुत ज़्यादा होते हैं। कई करैक्टर ऐसे भी हैं जिनके स्ट्रोक्स 15-20 स्ट्रोक्स तक भी हैं। तो इस वजह से वहाँ पे ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट होती है, और अगर आप ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर आपको लिखने में बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो ये चाइनीज़ टीचर अभी आपको इस स्ट्रोक ऑर्डर के में बताएगी कि कौन से स्ट्रोक्स को पहले लिखना है और कौन से स्ट्रोक्स को बाद में लिखना है। Learning the strokes, we can write Chinese characters now. If you write them in a certain order, you will feel more convenient, and the handwriting will be faster and better looking. For example, we should first write the leftmost one, and then from left to right is downward left, vertical, and again vertical to form the character which means the river. The character is writing from top to bottom, composed by 3 horizontal, which is the number 3 in Chinese. Very easy, isn't it? But what if the horizontal and vertical are put together? See, write horizontal first, and then find the middle point of the stroke to write vertical. Otherwise, it will not look good. Language is always full of exceptions. Here comes a special one. This word is written first in the middle with a vertical hook, then on both sides adding the dots. From these characters, we can see that balance and symmetry are linked with beauty to Chinese people, which produces the art, Chinese calligraphy. Well, we have learned a lot about Chinese and China in this lesson. Do you think Chinese is very interesting? Let's take a look at the exercises on the platform. Prepare for the next class to learn more Chinese. Thank you and see you next time.